Hello friends, today we are going to solve question number 11 from textual exercise of class 12, that chapter number 2 of accounts, that is annual accounts of partnership firm. A very warm welcome to my channel Let's Learn Spreading Wings. I request to all of you to subscribe my channel if you have not subscribed. Please share it maximum with your friends. So without any further ado, let us start with the solution of question number 11. As you all know very well that this chapter is one of the most important chapter of class 12, and this is going to be useful to you in your further studies also. Okay, so before preparing annual accounts, what do? We tick mark the adjustments. So these are the adjustments given to you. We read the first adjustment. Salim withdrew goods of rupees 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. For personal use, that means this is drawings which is not recorded. Okay, so this will affect trading account. I mean purchase, because that is subtracted from the purchase. If goods go out from the business firm in any other way except sales and purchase return, that's it, that is subtracted from the purchase. But here you cannot see any purchase account because trading account सीधा ही आपको दे दिया है. That means this trading account is 61,800. That means this is the gross profit given to you. So we will mark it because that entry will be made in trading account. We have to prepare revised trading account actually. Okay, the next adjustment, goods of rupees 8,000 purchased at the end of the accounting year, which is not recorded. So purchase unrecorded, again that will be recorded in the revised trading account. And yes, with credit purchase, which are affected, who are affected? Creditors. So creditors also will be marked. The next is prepaid insurance is rupees 400. So you have to mark insurance premium, that we have already marked. The next is from debtors, 800 is not recoverable. That is a bad debt. And then furthermore, they have told that provide 5% bad debt reserve on debtors. So again, there are two adjustments on debtors. So you just mark debtors. I have marked them before. Next is discount reserve on debtors is not required. Okay, fine. The next is provide depreciation on plant and machinery at 20% and on furniture. So you have to mark both plant, machinery and furniture. We have already marked them. The first thing that we have to do is tick marking the adjustments, and the second thing that we have to do is to prepare the columns. Okay, here which columns are to be prepared? Current account has been given to you. Yes, so partner's current account will be prepared. That is fixed. Instead of capital accounts, we are going to prepare current accounts. Now trading account balance has been given to you. Credit balance, that means it is gross profit that is given to you, but there are still some changes in it. So we have to prepare revised trading account. What we have to prepare? Revised trading account of partnership firm of Salim and Sabana for the year ending on 31st March 2017. Then we have to prepare P&L account. Then P&L appropriation. I have already prepared the formats. Then partner's current account, because balances of the current account has been given to you. And at last you have to prepare balance sheet. I hope it's clear to all of you that which columns are to be prepared. After doing these two steps, after preparing columns and after marking the adjustments, we will start making the entries from the trial balance. Capital accounts, Salim 1,60,000 and Shabana 1,20,000. This capital is going to be kept fixed. So we will write them directly in the balance sheet. In capital liability side, हम लिखेंगे fixed capital accounts, because हमें capital fix रखनी है. What are the name of the partners? Salim, Shabana. Do they bring any additional capital? No. So capital of Salim is 160 and capital of Shabana is 120.
and we take it in the outer column 280 because no additional capital has been brought by them. Next is current account. Balances of current account has been given to you. Salim 10,000 debit balance and Shabana 40,000 credit balance. So we again come to partner's current account. When we want to write out opening balance, then for sure the date would be 1st April 2016 on both the sides I write. Here 2 balance brought down and here by balance brought down. You can see the balance of Salim is debit 10,000. So it will be returned on the debit side and the Salim's column 10,000. Shabana has no debit balance. So put dash there. By balance brought down. Shabana has 40,000 credit balance of current account. You can see here 40,000. Next is stock of goods 31st March 2017. You can check this is the last date of our year, of our financial year. So this is the closing stock. How much is the closing stock? That is 54,600. So if closing stock has been given in the trial balance, then that will have only one entry and that is in the balance sheet. Balance sheet under the heading of current asset. So I write it here. Closing stock. And the amount that is given is 54,600. Then they have given cash balance. Cash balance is also your current asset. Then current account with bank. Then fixed deposit of SBI. These all are your assets. So these all balances will be returned in asset side. We write it separately. Cash balance. Where I am recording it. Asset side. Balance sheet. Cash balance is that has been given to you 560. 560. Then current account with bank. Which is 14,000. And then fixed deposit of SBI. Sorry. That is 80,000. What is it? 80,000. See, you can see cash balance is 14. Cash balance is 560. Then current account with bank 14,000. Then fixed deposit of SBI is 18,000. Now we come to debtors and creditors. They both have adjustments. Debtors are 36,800. So debtors will be writing here. They are of 36,800. Why I have left this much space? Because I have to minus bad debt and then from that difference I have to subtract bad debt reserve. Okay, there are 2 adjustments on debtors. So there should be at least 4 to 5 lines below that. Creditors will be written where? Capital liabilities. Remember one thing, debtors are written in asset. They are called current assets. Balance sheet, capital liabilities, creditors will be written over here. It will be written in the inner column because there is adjustment on it. Because we have not recorded purchase. How much is the creditors? Let me check out. See, here debtors and creditors both are given to you. So debtors have debit balance. So these are the debtors. And these are the creditors because creditors have credit balance. So 24,000 creditors that will be returned in the inner column. In the inner column of balance sheet capital liability side. Then we come to salary. Salary 37,000. Salary is returned in P&L debit. Where is P&L account? Okay. Salary. How much it was? 37,000. Okay, fine. We go ahead. Land building 120. There is no adjustment on it. Land building is your fixed asset. कहाँ लिखेंगे? Asset debts में, balance sheet में. Land building 120. Then plant machinery 40,000 in the inner column.
Plant and machinery 40,000 in the inner column because depreciation is to be calculated on it. There is adjustment on it. Similarly, furniture of 10,000 that will also be returned same place where balance sheet asset side furniture 10,000 will be returned in the inner column. Depreciation is to be separated from them, but we will be solving them while we do the adjustments. First of all, we will make all the entries of this accounts from the trial balance. Then we come to insurance premium. Insurance premium P&L account debit side. P&L account debit side. Insurance premium has adjustment. So we record it in the inner column. How much is it? 2,000. The next is leasehold machinery. Date has been given to you. So you need to write off something. How much amount is to be written off that we will see further. Now you just write this in the inner column. Leasehold machinery 60,000 where to record balance sheet asset. Leasehold machinery 60,000 in the inner column. Then stationery and printing 1,200. P&L debit. Here there is adjustment, so leave one line. Stationery, printing. How much is the amount? That is 1,200. Bad debt reserve. For these bad debt and bad debt reserve, I have taught you before that we have to make the table. What kind of table? Where do we have to prepare the table? P&L account, debit side, bad debt adjustment, plus bad debt trial balance, plus bad debt reserve adjustment. From the sum of all these three amounts, we have to subtract bad debt reserve of trial balance. But now we need to decide this debit balance is bad debt and credit balance is bad debt reserve. So this is bad debt of trial balance because this is a trial balance. So you can say that this is the bad debt of trial balance, that is 400. So I can write it over here, bad debt trial balance 400. Bad debt reserve trial balance 2,000. Still you have not got this because you have not solved adjustments. After we solve adjustments, we will come to know how much is the bad debt of adjustment and how much is the bad debt reserve of the adjustment. Okay, fine. Now we move to advertisement expense, that is 1,200. Where to write it? It is to be written on the same place. P&L account debit. Advertisement expense 1,200 directly in the outer column because there is no adjustment on it. Traveling expense will be returned the same place. P&L debit. How much is it? That is 400. No, it's not 400, but it's 800. Sorry. You can check, it's 800. Then trading account. Trading account means gross profit has been given to you. So you have to write here trading account credit side gross profit. How much is it? 61,800. Then loan of Shabana. Shabana is a partner, right? Loan of Shabana, that is a liability for the partnership firm towards this partner. वो क्या हो जाएगी? फर्म की शबाना के टूवर्ड्स की लाइबिलिटी हो जाएगी. सो कहाँ लिखेंगे 60,000 की शबाना की लोन लाइबिलिटी में? लोन ऑफ शबाना. इसमें हिडन एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली है, पर हम सीधा अभी बाहर लिख लेंगे और वो जो उसका इंटरेस्ट बाकी रहेगा वो अलग से दिखा देंगे. फिर डिस्काउंट रिजर्व 760. डिस्काउंट रिजर्व में क्या होता है कि एक्चुअली टेबल बनाते हैं P&L में. डिस्काउंट गिवन प्लस डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का माइनस डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस. बट हियर देर इज नो डिस्काउंट गिवन, देर इज नो डिस्काउंट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट.
बिकॉज क्लियर लिखा है कि डिस्काउंट रिजर्व नहीं गिनना है, तो सीधा ये डिस्काउंट रिजर्व यहाँ क्रेडिट साइड दिखा देंगे, P&L क्रेडिट। डिस्काउंट रिजर्व हाउ मच इज इट? इट इज 760, you can see. Okay, fine. Now we solve the adjustments. Salim withdrew goods of rupees 4,000 for personal use. It is not recorded in the books. सलीम 4,000 के गुड्स ले गया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम करंट अकाउंट में लिख लेंगे। डेट नहीं पता तो सीधा लिख लेंगे कि 2 ड्रॉइंग्स। सलीम में लिख लो 4,000, शबाना ने कुछ नहीं लिया। और दूसरा ये गुड्स गया तो परचेस में से माइनस करेंगे, बट परचेस तो है ही नहीं। हमने देखा था कि नॉट रिकॉर्डेड परचेस था, क्योंकि आगे परचेस की एंट्री तो दे दी होगी, तो जो नॉट रिकॉर्डेड परचेस होगा उसमें से माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। कितना? 4,000। 2 एंट्रीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि एडजस्टमेंट की एटलीस्ट 2 एंट्री तो होती ही है। गुड्स ऑफ रुपीज़ 8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड। 8,000 का गुड्स परचेज किया था वो नहीं लिखा हो, क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। 8,000 का नॉट रिकॉर्डेड परचेज, उसकी दूसरी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स में प्लस कर लो अनरिकॉर्डेड परचेज। हाउ मच? 8,000। इसको सीधा बाहर ले जाते हैं। 24 + 8 दैट इज 32,000। फ्रेंड्स, कीप इन माइंड वन थिंग विथ क्रेडिट सेल्स. I have taught you in my live classes many a times, but if you have forgot, then please note it down. Credit sales is connected to debtors. मतलब if we make some changes in credit sales, if we forget to record credit sales, then credit sales will be added. Similarly, debtors will be added. Same way, if credit purchase is not recorded, then credit purchase is added. And साथ में simultaneously you have to add to creditors also. Credit purchase किससे किया जाता है? क्रेडिटर्स से। ओके, अब आते आगे। 2 एंट्रीज का दिन है उसकी, हाँ सेकेंड की 2 एंट्री हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 400। प्रीपेड है तो सेट हो जाएगी हमारी, क्योंकि रिसीवेबल है। तो पहले तो ये लिख लेते, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 400। और उसको दूसरी एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस कर लो। कहाँ पे लिखा था इंश्योरेंस प्रीमियम? P&L डेबिट, उसमें से 400 माइनस कर लो, 1,600 आउट कॉलम। फिर देखो, फ्रॉम डेटर्स 800 इज़ नॉट रिकवरेबल, प्रोवाइड 5% बेड डेप रिजर्व। 800 नहीं रिकवर नहीं हो पाएंगे, तो वो बेड डेप है। कितना बचा? 36,000। उसमें 5% बेड डेप रिजर्व, इसके 5% हो जाएंगे 1,800, क्योंकि 10% 3,600, उसका आधा कर दो तो 1,800। ये सब्ट्रैक्ट करो तो 34,200 इन द आउटर कॉलम। बेड डेप एडजस्टमेंट की कितनी? 800। और बेड डेप रिजर्व एडजस्टमेंट की कितनी है? 1,800। वो लिख लो यहाँ पे, बेड डेप एडजस्टमेंट की 800 और ये थी 1,800। ये सबका प्लस कर लो, उसमें से इसको माइनस कर लो, तो बाहर क्या आ जाएगा? 1,000। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दोनों एंट्रीज कर दी इसकी। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई बात नहीं रिक्वायर्ड तो नहीं देना है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये 20% एंड ऑन फर्नीचर एट 5%। प्लांट मशीनरी कितनी भी है उस पर 20%। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं डेप्री, उस पर 20%। इसकी 10% कितने? 4,000। 20% उसकी डबल हो जाएगी, दैट इज़ 8,000। वो माइनस करने के बाद 32,000 आउटर कॉलम में। फर्नीचर में कितना डेप्री बोला है? 5%। इसका 10% है 1,000, 5% उसका आधा, दैट इज़ 500। सो 9,500 आउटर कॉलम में। अब आ जाते ये डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा। दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे? P&L डेबिट। डेप्री प्लांट एंड मशीनरी का था 8,000 एंड फर्नीचर का था हाउ मच इट वाज? 500। सो ऐसे करके 8,500 इन द आउटर कॉलम। बस अब कुछ ये वाले एडजस्टमेंट्स हो गए, लेकिन कम टू द हिडन एडजस्टमेंट। लीजोल्ड मशीनरी। लीजोल्ड मशीनरी में कोई भी लीजोल्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें याद रखो कि जितना अनयूज्ड टाइम है ना उसमें राइट ऑफ कर देंगे पूरी प्रॉपर्टी को। ये 5 ईयर्स के लिए प्रॉपर्टी है। ओके, अब ये स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2016। मतलब ये तो हमारा ईयर ही हो गया ना। हमारा फिनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2016 से ही स्टार्ट होता है। तो मतलब पूरे 5 ईयर्स अनयूज्ड हो गया, तो 5 ईयर्स में ही उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 5 कर दो,
60,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 12,000. तो यहाँ माइनस रिटर्न ऑफ 12,000. आउटर कॉलम में 48,000. इसकी दूसरी एंट्री P&L डेबिट. इसकी दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे? P&L डेबिट. यहाँ बीच में लिख लेते हैं रिटर्न ऑफ लीज होल्ड मशीनरी. हाउ मच इज वॉट? इट वॉज 12,000. दूसरा हिडन एडजस्टमेंट है लोन ऑफ शबाना. 60,000 की लोन है. पार्टनर की लोन पे कुछ ना बोला हो तो कितना इंटरेस्ट देते हैं? 6%. तो 60,000 का 6%. और लोन कब से लिया है पार्टनर से? हमने 1 अक्टूबर को. तो इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा उसको? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ऐसे करके 6 मंथ्स का देना पड़ेगा. तो पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा के. कैलकुलेशन ऑफ interest on loan of Shabana. How much is the amount of the loan? That is 60,000. Multiply by percentage 6%. Multiply by 6 by 12. 1,800 is the interest on loan. So outstanding loan interest. बाकी चीज़ें क्या लिखा है લાયબિલિટી માં બેલેન્સ શીટમાં? હાઉ મચ ઇઝ ઇટ? 1,800. બીજી એન્ટ્રી આપણો ખર્ચો છે એટલે અહીં લખી દો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન શબાનાઝ લોન P&L ડેબિટ. અહીં એટલે ક્યાં? દેટ ઇઝ ટુ બી રિટર્ન on the debit side in P&L account. That is 1,800. We have done with all the hidden adjustments. We have also done with the adjustments. Now we need to close the columns, close the accounts. Trading account will be closed. 61,800. 8,000 minus 4,000, that is 4,000. 61,800 में से 4,000 माइनस कर लो. 57,800 is your gross profit, that is to be transferred to P&L account. To P&L account. Gross profit. यहाँ लिख लो कि बाय trading account, by revised trading account. Gross profit, how much is it? 57,800. Now we have to check कि कौन से अकाउंट की कौन सी बैलेंस. नाउ वी हैव टू चेक दैट विच साइड हैज़ मोर अमाउंट, लाइक डेबिट और क्रेडिट. सबका प्लस करो, डेबिट का भी प्लस करो और क्रेडिट का भी प्लस करो. तो यहाँ पे डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है. आप इसको ऐड करोगे ये सारी अमाउंट को, तो दे विल बी एडेड अप टू 65,100. Out of the 65,100, you have to subtract this both. So you'll be getting 6,540. That is net loss. What is it? Net loss. और वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन. नेट लॉस कहाँ ला देना है? P&L अप्रोप्रिएशन. लॉस है इसीलिए कहाँ लाएंगे कि डेबिट साइड लाएंगे. टू P&L अकाउंट नेट. How much is the net loss? That is 6,540. P&L appropriation is to be closed. 6,540 में से हम जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6,540. ये क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा डिविजिबल लॉस बाय करंट अकाउंट. डिविजिबल लॉस कुछ बोला नहीं है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देना है. सलीम का भी 3270, शबाना भी 3270. अब उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे. प्रॉफिट होता तो क्रेडिट करते, क्योंकि लॉस है तो यहाँ लिखेंगे लास्ट डेट डाल के. टू कहाँ से लाए हम? टू P&L अप्रोप्रिएशन. You can write in the bracket that this is divisible loss.
अब हमें इनके अकाउंट्स क्लोज करने। यहाँ ये रेफरेंस बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, शबाना का डेबिट बैलेंस एक्चुअली और सलीम का क्रेडिट है। अब हम इसकी फाइनल बैलेंस निकालेंगे। तो सलीम की हम बात करें तो 40,000 ज़्यादा है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। 40,000 में से ये 7,270 माइनस करो तो क्या मिलेगा? 40,000 में से 7,000 माइनस करो तो 33 में से 200 माइनस करो मतलब 32,730। लास्ट डेट डालो, लिख लो कि टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड हो गया सलीम का। अब बात करते हैं शबाना की। तो 13,270 ये हो गया इसका डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है। लास्ट डेट पे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। सलीम का क्या मिला हमें? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में। करंट अकाउंट सलीम 32,730 था ना, यस। और यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट शबाना, उसका डेबिट बैलेंस था 13,270। अब हम वी विल गेट टोटल ऑफ दिस बोथ द साइड्स। Okay, total of this side is 4,06,530। अब इस बाजू का करेंगे तो 0, 3, 7 और 8, 15, 31, 1 और 2, 3, 3 और 1, 4, 4 और 6 and 3, 0 and 4। ये फ्रेंड्स जो कैपिटल का बैलेंस है वो मैंने सीधा बाहर प्लस करके डाला है। आप लोग सीधा ही लिख सकते हो 160 बाहर और 120 बाहर, ऐसे भी आप सेपरेटली लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर द थिंग्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हो। इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।